Good morning, team. Fed yesterday maintained its stance of keeping interest rate high to tame inflation. So this is why yesterday Indian market also corrected ahead of Fed meeting. So I think this will have some impact on the market if the interest rates are not likely to come down in this year 2023. It will have some impact. But irrespective of Fed action, Brent crude corrected. And dollar also was weak. Now, this is unique. Now Brent was at $78. Another 5% correction. Previously, it corrected 4%. So in the last 2 days, this correction is huge. So this is very positive for oil marketing companies. So IOC, HPCL, BPCL will benefit. And even gas stocks are likely to benefit because the winter is not as severe as expected. So we expect IGL, MGL, Gujarat Gas also to start to rally. Even GSPL also can benefit out of it. Ashok Leyland's Switch Mobility, JBM Auto, and PMI Electro Mobility are winners in 3,000 crores or $362 tender run by state run CESL. Tata Elxsi has said that Tether, for Tata Motors, they have conducted a software where the vehicle platform will scale up to new heights. This will onboard 5 lakh vehicle on the CV platform. So it is something where all the CV vehicles they can monitor and they can do something. So I'm not well aware of it, but the Tata Elxsi has been there in all these things, autopilot vehicles, driverless vehicles, cloud implications and everything. Gujarat Industrial Power has approved EPC contract to BeamG, Whalegi contractors for 259 crores for road, drain, pond work of solar or wind hybrid RE park. The RE park will be for 2,375 megawatt capacity. It is in Great Ran of Kutch area, Gujarat. So for that, all the extra construction activity will be done there. AU Small Finance Bank reported their numbers, not results, but their corporate announcement for the quarter. So their advances was higher by 20% at 56,000 crores. On quarter-on-quarter basis, it is 7%. Deposit was higher by 16% at 61,101 crores. Yesterday, Coal India and the Coal Union inked MOE, Memorandum of Understanding. They will have a minimum guarantee of 19% employee benefit for their 2.3 lakh employees. These are non-executive employees, and this will be implemented from 30th June 2021. So the contract will be for 5 years. At least, Coal India, for 5 years, there will not be any strike because the wage negotiation is over. So this is positive for Coal India because expected was around 28%. But the negotiation has gone well. It is 19%. So that will bring, it is a very good negotiation there. IRB has announced a stock split. So 10 rupee stock will become 1 rupee. That means 1:10 stock split will come. SJVN has got a union cabinet approval for investment of 2,614 crores for companies 382 megawatt Suni Dam Hydro Project, Himachal Pradesh. So this will be for 5 years and 3 months from the commencement of construction. And this will generate 1,382 million unit annually. Yesterday, Bharat Forge and General Atomic partners have signed an agreement
to manufacture aero structures in India. This will also help India to develop a manufacturing of high-end drones, landing gears component, sub-assemblies, and assemblies of remotely piloted aircraft into the country. Very positive for Bharat Forge. Bharat Forge is one company we like. There are a lot of things happening in the company, and we feel if somebody is holding for next 2 years, 50% return is possible. IPO data, there was one interview on CNBC TV18 where I got some data on the IPOs. IPOs for 2022 calendar year, we had 40 IPOs, and these 40 IPOs raised 61,286 crores. But in 2021, it was 1,19,000 crores. So it is far less than what was raised in 2022, because many of the IPOs generated loss over a period of time. So the retail interest has come down, even institutional interest has come down. And in this 61,000 crore, LIC alone contributed 20,000 crores. So it is not a great year for IPOs. In 2022, even OFS was 11,269 crores. This is the lowest in 4 years. So in 2022, total fundraising is 90,995 crores, which is down 55% year-on-year basis. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सो फर्स्ट जो अपडेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर है. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उनका जो एक्विजिशन है न्यूट्रिशनल बेल उसको एक्वायर कर लिया है. उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है और उसकी जो वैल्यू है वो 17 करोड़ है. देन नेक्स्ट अपडेट है मैरिको के ऊपर. मैरिको की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23 का वो ग्रो हुआ है लो सिंगल डिजिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग देखें तो. और कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि वो मॉडरेट ग्रोथ होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्योंकि लोअर रेवेन्यू ग्रोथ के कारण. नेक्स्ट अपडेट है एनटीपीसी के ऊपर. जो सब्सिडियरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उन्होंने साइन किया है नॉन बाइंडिंग MOU विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ जो डेवलपमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ऑन पावर प्रोजेक्ट. सो एनटीपीसी जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रही है रिन्यूएबल एनर्जी में और वो सप्लाई करेंगी 400 मेगावाट राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर जो HPCL को रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट अपडेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर. RBI ने उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था वो लिफ्ट कर लिया है. जो थर्ड पार्टी एजेंसी को अपॉइंट करने के लिए रिकवरी ऑन रिपोजिशन के लिए वो रेस्ट्रिक्शंस RBI ने मतलब लिफ्ट किया है. और कंपनी के जो बोर्ड है वो उनकी जो बैठक है वो February 3 को है जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए है. द नेक्स्ट अपडेट है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर. उनके बिजनेस अपडेट आया था दिसंबर 2022 का. तो उसमें जो टोटल कार्गो हैंडल है वो ग्रो हुआ है 8% से 25.1 मिलियन मेट्रिक टन से और कार्गो वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है 8% से 253 मिलियन मेट्रिक टन अप्रैल टू दिसंबर 2022 पीरियड में. देन बजाज फाइनेंस के भी बिजनेस नंबर आए थे. उसमें दिसंबर क्वार्टर में उनका AUM है एज ऑन दिसंबर 31 2022 तक जो राइज हुआ है 27% से और वो 2.3 लाख करोड़ है. और उनका जो न्यू लोन अकाउंट है वो ग्रो हुआ है 5.4% से और फिगर है 7.8 मिलियन. डिपॉजिट बुक है वो 41% से इंक्रीज हुआ है 43,000 करोड़ के अराउंड कुछ. देन RBL बैंक के भी अपडेट आए थे. RBL बैंक के भी बिजनेस अपडेट में दिसंबर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है 11% से 81,746 करोड़. कासा जो है वो डिपॉजिट इंक्रीज हुआ 18% से 29,948 करोड़. उनका ग्रॉस एडवांसेस इंक्रीज हुआ है 14% से 68,371 करोड़ से. देन IT के ऊपर अपडेट है. TCS जो कंपनी है उनका सिलेक्शन हुआ है CTBC बैंक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है
और ये डील के जो फाइनेंशियल है अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और टीसीएस जो है बेसिकली ये हेल्प करेंगे बैंक को कि इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के साथ वो और मतलब आएगी और ओवरऑल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में न्यू स्ट्रैटेजीज न्यू इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टीसीएस के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है इन्फोसिस के ऊपर। जो सिंगापुर स्टार हब के सिंगापुर बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, उन्होंने इन्फोसिस कॉम्पैक्स को चूज किया है जो एनेबल करेंगे आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, और उनका जो स्ट्रेंथ है ऑपरेशन और साइबर सिक्योरिटी में उसमें भी इम्प्रूवमेंट करेगी। ये डील की भी फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं है, बट ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। देन आईटी सेक्टर के ऊपर अपडेट है कि एज पर मीडिया का रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में जो फीस है H1B वीजा की वो इंक्रीज होगी। करंटली कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस $10 है और वो एक्सपेक्ट है कि वो $215 तक जा सकते हैं। तो विच इज अराउंड ये जंप 21 टाइम्स है। तो ये मतलब ये जो ह्यूज हाइक है जो अच्छी नहीं होगी इंडियन आईटी कंपनी के लिए, जो अराउंड उनका जो टोटल रेवेन्यू है ट्रैवल कॉस्ट का इंक्लूडिंग वीजा एक्सपेंस। तो इफ ये अप्रूव हुआ तो हमारा हमारा बिलीफ है कि मार्जिन से वो इम्पैक्ट करेंगे अराउंड 1.5% से। तो हम लोग प्रेफर करेंगे इस सेगमेंट में इन लार्ज कैप में इन्फी और टीसीएस लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर जो कंपनी है उन्होंने कंप्यूट किया और क्लेम किया है टैरिफ बेनिफिशियरी जो बेस है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, उनका जो कमीशन ऑर्डर है उसको ग्रांट कंपनसेशन इमरजेंसी सप्लाई जो मुंद्रा प्लांट है उसमें। नेक्स्ट अपडेट है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट है जो सब्सिडरी जीआर बीमसर भूज हाईवे है, उनको रिसीव मिला है लेटर फ्रॉम NHAI से जो डिक्लेयर और उनका अपॉइंटमेंट डेट है Jan 2 का 2023 का, जो अपग्रेड करेंगे NH 341 सेक्शन फ्रॉम बीमसर टू अंजर भूज गुजरात में 4 लेन्स में। और ये बीड की प्रोजेक्ट कॉस्ट है कुछ 1085 करोड़ की। देन नेक्स्ट अपडेट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इनिशियल आउटले है 19,744 करोड़ का नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए। और ये मिशन का एम है कि वो एनहांस करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन एंड बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजेस। और ये की कंपोनेंट है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में। तो एनुअल टारगेट होगा फर्स्ट प्रोड्यूस का 5 मिलियन टन के अराउंड ग्रीन हाइड्रोजन का। और ये हेल्प करेगा टू फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स के लिए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है इलेक्ट्रोलाइजर्स के जो प्रोडक्शन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट अपडेट है बायजूस के ऊपर। जो बायजूस के फाउंडर है उन्होंने प्लान किया है कि उनका जो स्टेक है बायजूस का वो 40% का वो कॉन्फिडेंस है गिव करेंगे इन्वेस्टर्स को। और करंटली टॉक चल रहा है कि बैंक के साथ और फिनेंशियल्स के साथ जो स्टेक हाइक के लिए, और उनका जो स्टेक हाइक था पहले 15% कंपनी में था। देन नेक्स्ट अपडेट है फेड की मीटिंग में जो स्टांस था उनका वो भी तभी हाई इन्फ्लेशन के और ही है, तो उसका करेक्शन हम लोगों ने कल मार्केट में देखा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट अभी ये कैलेंडर ईयर में 2023 में नीचे नहीं आएगा, तो इसका इम्पैक्ट हम लोग मार्केट पे देख सकते हैं। बट कल के सेगमेंट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $78 के अराउंड है। तो लास्ट टू डेज में इसमें ह्यूज करेक्शन देखा गया। तो ये एक पॉजिटिव है ऑयल मेकिंग कंपनीज IOC, HPCL और BPCL के लिए। इसके अलावा जो विंटर सीजन है वो इतना अग्रेसिव नहीं है, तो गैस स्टॉक के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा IGL, MGL, GSP जो कंपनीज है उनके लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है एयू बैंक के नंबर्स आए थे। एयू बैंक के नंबर्स में उनका जो एडवांसेस है वो 56,000 करोड़ के अराउंड है, कुछ क्वार्टर एंड क्वार्टर 7% से। उनका जो डिपॉजिट है वो अराउंड 16% से इंक्रीज हुआ है 101 करोड़ के ऊपर। देन नेक्स्ट अपडेट है भारत फोर्ज के ऊपर। फोर्ज के ऊपर एक अपडेट आया था कि यो यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरर जनरल ऑटोमिक्स उन्होंने साइन अग्रीमेंट किया है भारत फोर्ज के साथ, जो मैन्युफैक्चर करेंगे मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स
सबलेसिवलीज एंड रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के जो व्हील मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए हेल्प करेगा। और ये जो पार्टनरशिप है वो अनाउंस है मतलब जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम के साथ। और ये पॉजिटिव है और हम लोग भारतवर्ष के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखो तो इसमें 50% रिटर्न बन सकता है। देन नेक्स्ट अपडेट है आईपीओ का जो डेटा आया था सीएनबीसी इंटरव्यू में, उसमें आईपीओ 2022 कैलेंडर ईयर में अराउंड कुछ 40 आईपीओ आए थे। और इन आईपीओ ने रेस किए थे कुछ अराउंड 61,286 करोड़। और 2021 में हम लोग कंपेयर करें तो 1,19,000 के करोड़ फंड रेज हुआ था। तो हम लोग 2 साल को कंपेयर करेंगे तो 2022 में बहुत ही कम फंड रेज हुआ है कंपेयर टू 2021 में। और इसमें एलआईसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 61,286 में 20,000 अराउंड कुछ एलआईसी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो इतना कुछ अच्छा नहीं था आईपीओ के लिए ये ईयर। और ओएफएस का भी डेटा हम लोग देखें तो लोएस्ट था लास्ट साल में। ओवरऑल टोटल फंड रेज हुआ है वो 19,995 के करोड़, जो डाउन है 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस से। Technical derivatives. Yesterday's trading session, it was a bear march on the D Street, that index falling from the opening ticks only. And in the second half, we see index tried to bounce from the 18,000 zones up to 18,100 level, but in the last hour also again index slipped below and was closing near the day lows only, that near 18,000 level. So index was barely managed to hold in that level. Now, if we see that 18,200 and earlier the 50 SMA would be acting as a stiff resistance, and 18,100 would be also acting as a crucial hurdle for the index. So any now, if bulls have to gain their control though, so they need a close about 18,300 levels, or we can test 17,800 levels also going forward. So today being a weekly expiry, so index would be trading under a pressure only. And any dips towards 17,800, and if we slip towards, if we close below 17,800, then 17,500 would be also can be tested very sooner or later. So on the sectoral front, if we see, then all the sectors are closed in the red, led by metals, PSU Bank, and oil and gas. And then lastly, if you see in the Bank Nifty also formed an engulfing bearish candlestick pattern. So Bank Nifty was trading in a range from last 3-4 days. Yesterday it broke that range and closed below 43,000 level. So for Bank Nifty also now 43,500, 43,600 zones would be acting as a stiff hurdle for the index. Feeling if the trend continues toward downside, then 41,500 and 41,600 earlier the supports of that index would be key for the Bank Nifty too. So coming to the derivatives data, then if you see there was a sharp build up to the tune of 3% and with addition of 0.44 million shares. PCR also came into oversold zone almost 2.72 levels, 0.6, 0.5 is the major oversold zone. And for the Bank Nifty, if you see PCR also dipped from 1.1 to 0.6. So Bank Nifty PCR is also trading under an oversold zone. So next, if you see in the options front, then 17,900 and 17,800 are seeing the highest addition for the put side, and on the call side, 18,100, 18,200 would be acting as a replacement. Similarly, for the Bank Nifty, 43,000, 42,500 would be acting as a support for the index, and 43,000 and 43,500. So if you are seeing there is a straddle at 43,000 level, so this would be the key level to be watched. If you breach decisively this level, then we would be heading down further here. Coming to the FIs data, now FIs are selling the index in the cash also by 2620 crores, and in the futures, if you see now they have shorted by 27 contracts additional. So now they are total short by 41,600 contracts, and that long short ratio is trading towards 36%. So now FIs are also building up their short positions aggressively. And lastly, on the stock side, if you see the Max Financial and SBI Life can be accumulated at the lower levels, they are looking strong, led by Kajaria Ceramics. So that's it from mine. I'll hand over to Archana Madam for more updates. Thank you, Hitendra. Good morning, team. So, few updates from my side, starting with Hindustan Unilever. The FMCG major has completed the acquisition of 19.8% shareholding of Nutrition Lab for rupees 70 crore. Comes as a positive development on the company's side. On Marico, the company's consolidated revenue in Q3 FY23 grew in a low single digits on a year-on-year basis. As there has been some resemblance of stability in key input prices and consumer pricing across key franchises, gross and operating margins are expected to improve both on a sequential and YY basis. Company expects a modest growth in operating profit due to the lower revenue growth.
On NTPC, the subsidiary NTPC Green Energy has signed a non-binding memorandum of understanding with Hindustan Petroleum Corporation for development of renewable energy-based power projects. NTPC will tap business opportunities in renewable energy and supply 400 megawatt round-the-clock renewable power for requirements of HPCL. On Mahindra and Mahindra Financial Services, the RBI has lifted restrictions against Mahindra Finance on appointing third-party agents for recovery or reposition. Also, the board of the company will meet on Feb 3 to consider its financial results for the Q3 FY23. On Adani Ports and Special Economic Zone, the business updates for this quarter, the total cargo handled grew by 8% to 25.1 million metric tons, while the cargo volumes increased by 8% to 253 million metric tons during April to December 2022 period. On Bajaj Finance, the business update for the quarter. So AUM as of December 31st, 2022 rose by 27% to 2.3 lakh crore. New loan accounts grew by 5.4% to record figure of 7.8 million, while deposit book rose to 41% to 43,000 crore. On RBL Bank, the quarterly updates, the total deposits increased by 11% to 81,746 crore, while the CASA deposits increased by 18% to 29,948 crores. The gross advances for the company increased by 14% to 68,371 crores. Few updates on IT side, starting from TCS. TCS has been selected by CTBC Bank to digitally transform its business. The deal financials were not disclosed. As a part of this deal, TCS will leverage its banks to help the bank come up with the innovative solutions across banking and wealth management. We believe this is a positive development for the company. On Infosys, the StarHub, which is a Singapore-based communication provider, had chosen Infosys Comms to enable its IT transformation and strengthen their operations and cybersecurity. The deal financials were not disclosed. As a part of this deal, Infosys Comms will execute large-scale IT operations, management, and drive innovation. This is a positive development for Infosys. A bit of a negative development for IT sector. As per media reports, USA may increase fees for H-1B visa. Currently, the registration charge is close to $10, which is expected to go up to $215, which is a jump of around 21 times. This huge hike in fees does not bode well for the Indian IT companies, which incur close to 1% of total revenue as a travel cost, including the visa expenses. If this is approved, we believe that margins will be impacted by around 1.5%. We prefer large cap IT stocks like Infosys and TCS. So that's it from my side. Now I request Brijesh to take it from here. Thank you, and over to you, Brijesh. Thank you, madam. Good morning, all. So, a few more news updates from my Byju's Ravindra, who is the founder of the Byju's, had planned to enhance his stake in Byju's to 40% to give confidence to the investors. He is currently in talks with the banks and financiers to for this stake hike. He would be hiking his stake by 15% in the company. In the latest round of funding, Byju's was valued 22 billion by the buyer, but the buyout is likely to happen at a lower valuation. Till that, the Byju's had raised over $5 billion. Next is on the income tax. The experts have called for the rehaling of the income tax structure in India. They are looking to rationalize of rates and limits, but a gradual reduction in the number of exemptions and rebates. Some likely changes include raising basic exemptions limit up to ₹5 lakhs, reduction in the peak tax slab rates, higher limitations for the various exemptions. There are also likely changes to the simplified tax regime with the critical exemptions like HRA and insurance being extended. This is subject to the approval which takes place in the budget. Next is on Union Cabinet approved an initial layout of ₹19,744 crores for National Hydrogen Mission. The aim of the mission is to enhance domestic production of the green hydrogen and boost manufacturing of electrolyzers, a key component for making green hydrogen. The annual target is to produce 5 million tons of green hydrogen. There would also be 2 financial incentive schemes for domestic manufacturers of electrolyzers and for the production of green hydrogen. It will also support the pilot projects in the emerging and end user sectors of the green hydrogen.
Next is on infra projects. The subsidiary of GR Bhimsar Bhuj highway has received a letter from the NHI declaring for the upgradation of section NH 341 from Bhimsar to Ajmer Bhuj in Gujarat to 4 lanes. The bid project is cost 1,085 crores. Lastly, on Tata Power, the company will compute and claim tariffs from the beneficiaries based on the Central Electricity Regulatory Commission order that grants a compensation for emergency supply from its Mudra plants.